Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another lecture in our DSA series. So as we know that in the previous lecture we completed C++ STL. Okay, so moving onwards in our DSA series, from this video onwards we'll be starting with arrays and mathematics. So basically for solving any problem in DSA further, you need the basic understanding of how arrays and their problems as well as the basic mathematics that is required, like basic number theory and the basic operations about numbers like sieve and divisibility, prime numbers, and GCD, how to calculate the greatest common divisor, and a lot of other stuffs and a bunch of stuff. Okay, so from this lecture, we'll start that. In today's video, we'll be covering what are prime numbers, how do we divide numbers, what are factors, what are multiples, how do you basically find the divisors of any number, how do you check out if a number is prime, the most optimal algorithm for it, and then how do you prime factorize a number, and how do you extend or use that approach to find the count of all divisors. So we'll be covering everything, all that in this video. So without any further ado, let's jump to it. Okay, so let's start our lecture, guys. So first of all, we'll be talking about divisors and multiples. So starting with basic number theory, we'll talk about divisors. So what are basically divisors? So let's say you are given a number A and you want to find the divisors of number A. So basically divisors of number A represent the numbers that divide A, right? That divide A. So all numbers that divide A become are its divisors, right? Are its divisors. For example, let's say we have 6. So 6 can be divided by what? 1. So basically 1 is a divisor of 6. Then 6 is divisible by 2. That's why 2 is also a divisor of 6. Then we have 3. So 3 also divides 6. That's why 3 is a what? Divisor of 6. So basically all the numbers that divide a particular number, a particular given number A, becomes a divisor of A, right? In a similar way, we have something known as multiples. So what are multiples? Multiples means, let's say you want to calculate the multiples of number A. This means all the numbers that A can divide. Okay. Divisor was what? Divisor was basically given a number A. What are the numbers that divide A? What are multiples? Multiples are basically all those numbers that can be divided by A. Right. So all numbers that are divisible by A. That are divisible by A. Okay. So for example, let's say you have number 6. Then what are the multiples of 6? 6 itself, because it's the first multiple. 6 into 1 is 6. Then we have 12. Then we have 18. Then we have 24 and so onwards, right? So this basically means these are multiples of 6, right? So that basically covers up the what are divisors and what are multiples. Now the thing comes, how do we calculate these divisors, right? How do we calculate these divisors? Okay, so before moving on to that, let's talk about some kind of numbers, right? What are kind of numbers? So some basic stuff, like what is odd? Odd basically a number that is not divisible by 2. Not divisible by 2. Okay, like 3, 5, 1. Then we have even numbers. Even numbers are what? Even number basically means divisible by 2, right? Mod equal to 0, like 2, 4, 6, 8. Okay, so this mod operation basically means remainder. So you know that whenever you divide a number and if you get a remainder 0 basically means that your number is completely divisible, right? That's why we've written mod 2 is equal to 0. Basically means divisible by 2. Okay, then we have what? Then we have real numbers. So real numbers are basically completely real numbers, like decimal point numbers, right? They're basically real numbers. Then we have integers. Integers are basically what? -1, and every integer basically non-float values, right? Non-decimal values are all known as integers. -1, -2, everything up to 0. Then we have natural numbers. So natural numbers are what? Natural numbers start from 1 onwards. 1, 2, 3. These are basically what? These are basically integers greater than 0, right? Then we have whole numbers. So whole numbers are what? They only just extend backwards to include 0, and then it's the same as natural numbers. Okay, so this is basically greater than equal to 0. All integers greater than equal to 0 are called whole numbers, and all integers greater than 0 are known as natural numbers. Okay, so these are the basic numbers, but now we have something known as the main important prime and composite numbers. Okay, so first of all, what are composite numbers? Composite numbers are those numbers that have the number of divisors greater than 2. Okay, numbers that are divisible by more than two numbers. Okay, basically means that composite numbers are the ones who have number of divisors greater than 2. Okay, acha, sabse pehle, whenever you are trying to find the divisors of a number, so let's say we have taken a number 6. So we can see that 1 and the number itself, number 1 and the number itself are always the divisor of that number, right? क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 हमेशा हर एक नंबर को डिवाइड करता है, और जो नंबर n है, let's say we have taken a number n, so n is always divisible by n, right? So this means कि हमारे दो डिवाइजर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं. वो कौन है? 1 and the number itself.
सो कॉम्पोजिट में जो दो डिवाइजर मैंने बोले हैं ना, दीज आर बेसिकली वन एंड एन इटसेल्फ. सो एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अदर नंबर जस्ट rather than 1 and n are known as composite. 1 and n को छोड़ के अगर कोई भी नंबर किसी भी और नंबर से डिविजिबल है, that becomes composite, right? Like let's say we have number 4. So 4 is divisible by what? 1, 2 and 4. So we can see 1 और 4 को हटाने के बाद हमारे पास 2 बच रहा है. So we have an extra divisor, right? That's why this number is what? Composite. Let's take 6. 6 is what? 1, 2, 3 and 6. So if we remove 1 and 6, we are left with two divisors, 2 and 3. So again we have 4 number of divisors. So excluding 1 and 6, if there are some divisors left, it means that the number is composite. Let's take an odd number like 9. 9 is what? 1, 3, 9. So if I remove 1 and 9, again we are left with 3. So again this becomes a composite number. What are prime numbers? Prime numbers are just the numbers that are only divisible by number 1 and itself. Divisible by 1 and n itself. Okay, like we have 2, right? So if we find divisors of 2, we have 1 and 2. We have 3, 3 is only 1 and 3. If we try to divide by 5, we have 1 and 5. We have 7, 7 is 1 and 7. Then we have what? Then we have 11, then we have 13, then we have what? Then we have 17, then we have 19, then we have 23, and you go on with like 29, and you can move forward, right? So these are basically the prime numbers that are only divisible by number 1 and n itself. Okay, they only have two divisors. One is 1 and the second divisor is the number itself. Okay, so now point comes, how do you find if a number is prime? How do we check? How do we check if a number is prime? It's prime. Okay, so the first approach that can come to your mind is that, what we can do. We can basically run a loop from 1 onwards and go up to number n, whatever the number has been given to us, and we can try dividing n by I, right? Let's say we run a loop from I equal to 1 up till n, and we check how many numbers are dividing n. So basically all the numbers that give a remainder 0 on dividing n, basically they are divisors of n number n, right? So you can count those divisors, and at the end of this code, you can just check if the count of your divisors was greater than 2. If this count was greater than 2, this means that your number is what? It's not prime. Okay, but if your count is less than, not less than, is exactly equivalent to 2, it means that your number is what? Then your number is what? It's prime, right? If you have exactly two number of divisors, then it means it's a prime. Okay, another thing, that number 0 and 1 are neither prime and nor composite. Okay, number 1 and 0 are neither prime nor composite. Okay, let's not talk about 0, especially talk about 1. So 1 is neither 0 nor composite because 1 has only one divisor, which is 1. So it does not fall into category of either prime or composite. Okay, but for the time being, when we generally solve the questions, we take two set of numbers. One are prime and the others are non-prime. So that's why we also will consider one and the other composite numbers in a one set. Okay, that they are non-prime. Okay, so the first approach we have discussed that, you can run a loop and you can check the number of divisors. If the count of divisors is equal to 2, it means it's a prime number, else not. Okay, what is the time complexity of this approach? If you see we are running a loop, right, it means the time complexity is order n. Okay, fine enough. If your value of n is around 10 to the power of 6, it will easily work. But yeah, makhan. Okay, but let's say, because when you're solving questions, this is not the ideal case, right? The value of n can be big. The value of n can go up to like 10 to the power of 9, okay, or 10 to the power of 10, or even 10 to the power of 12. Okay, so these are basically the uppercase. Okay, so whenever you are involving, you have a question that specifically deals with checking a prime, or if some part of your code is going to check if a number is prime or not, you will see that will always be bound by these conditions, because above this will not be able to find a suitable algorithm that solves it within the expected time limit. Okay, let's try to see can we optimize. Okay, let's try to see how can we optimize. Okay, so let's say now instead of running my loop from 1 to n, how about if I run my loop to 1 to n by 2? That also is fine enough, because okay, so let's take an example. Let's say we have number 6. Okay, then if I divide 6 by 2, we have 3. So basically I am saying that you only need to check up till 3. After this 4, 5, 6, you do not need to check. Why? Because we can see that after n by 2 you will never be able to find any divisor, right? After n by 2 you would never be able to find a divisor, because क्योंकि half से तो ये ऊपर जा ही चुका है, ये half से ऊपर चला गया है. Now अगर ये n by 2 इससे बड़ा होता है, then you cannot find any integer number that gives you the product as the number itself, right? So ये आपको कभी नहीं मिल पाएगा कि आपको कोई यहाँ पर integer value मिल जाए, right? That's why we can see that a number of divisors are basically concentrated in the region from 1 to n by 2. इसका मतलब instead of running the loop from 1 to n, we can half the number of iterations to n by 2. So again, what is the time complexity?
द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल रिमेन्स ऑर्डर n। याद रखना, ये कांस्टेंट फैक्टर डिवाइड किया है, इट विल अगेन बी n, राइट। अगर मैं 10 की पावर 9 ले लेता हूं, इफ आई इवन डिवाइड बाय 2, इट स्टिल इज व्हाट 5 into 10 power of 8, it is still too big to run, right? This cannot run. So we can see that we have a a problem that for bigger numbers like 10 power of 9 or 10 power of 12, we cannot use this algorithm, right? We cannot use this algorithm. So then what should we do? Then what should we do? Let's try to focus on some very interesting property here. Okay, so let's say we have a number n. Okay, हमारे पास एक नंबर n है, इसके ना जितने भी डिवाइजर्स हैं उनको एक बार लिस्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, वन मोर थिंग, द डिवाइजर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ओके, मैं इसका मतलब क्या होता है, आई विल शो इट टू यू. लाइक व्हेन वी हैव नंबर n, सो इसका सबसे पहला डिवाइजर पेयर क्या है, 1 n, राइट. वी कैन से 1 n. So basically 1 into n is what? It gives you n. So this is the first divisor pair, right? So that is why I was saying that divisors always occur in pairs, right? इसको अब एक्सटेंड करते हैं. Let's have 2, I got n by 2. Again we can see that 2 into n by 2 is equal to n, right? क्योंकि 2 cancel हो जाएगा. Similarly we have 3 and n by 3, and then we can move forward in the same way, and there would be some number a like n by a. Okay, let's say हम यहां तक बस आते हैं. Let's say we cover up till these number of elements. I say कि ये जो पेयर्स होते हैं ना, ये रिवर्स हो जाते हैं. ठीक है, बेसिकली यू विल आफ्टर दिस a you will get the same pairs but in the reverse form. ओके, कहने का मतलब क्या है, लेट्स से वी हैव नंबर 6, वी गेट 1 6, एंड देन वी हैव 2 3, एंड देन वी हैव 3 2, एंड देन वी हैव 6 1. तो आप देख सकते हो इस पॉइंट के बाद से योर डिवाइजर पेयर्स आर बेसिकली द सेम. 2 3 3 2 मींस सेम थिंग, 6 1 1 6 बेसिकली मींस द सेम थिंग, राइट. तो आप देख सकते हो इस पॉइंट के बाद से द डिवाइजर्स पेयर्स आर रिपीटिंग. दैट्स व्हाई यू डू नॉट नीड टू चेक फॉरवर्ड, राइट. अगर तुम्हें सारे डिवाइजर्स चाहिए, there is no need to proceed forward, right? You can directly get your divisor pairs from here onwards. यहाँ पर आप देख सकते हो, you can find all the divisors of number 6. आपको इस iteration के आगे बात जाने की जरूरत नहीं है. So let's say we have reached a number a such that after this your divisor pairs will repeat. Okay, your divisor pairs basically will repeat in the reverse form. Like we have 2 3, it becomes 3 2. Okay, so this means इस range के within we can find all the divisors of number n. Within this number of iteration, we can get all divisors of number n, राइट. क्योंकि हमें देखो 1 मिल गया, n मिल गया, 2 मिल गया, n by 2 मिल गया, 3 मिल गया, n by 3 मिल गया. ऐसे करते करते a मिल गया, n by a मिल गया. इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी जो डिवाइजर पेयर है वो बस रिपीट हो जाएंगे रिवर्स फॉर्म में, राइट. सो सिंपल सी बात है, वो करने का फायदा है नहीं, राइट. दैट विल जस्ट यूज अप योर टाइम. Okay, so this means that we can get all the divisors of a number n within a number of iterations, right? We can find all the divisors of n in a number of iterations. ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़े ही नहीं. So now let's try to find कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस अप्रोच का. So basically our loop worked until how many times? 8 times, right? 8 times. Okay, 8 times. या बेसिकली हम कह सकते हैं कि until unless this get reversed. Okay, until unless this get reversed, या फिर आप एक और चीज कह सकते हो कि until and unless a is less than equal to n by a. You can see कि जैसा ही मेरा a जो है that becomes what? That becomes greater than n by a. That becomes greater than n by a. इसका मतलब this is a good point to stop. That is a good point to stop. यहाँ पर देख सकते हो 1 less than 6 है, very good. 2 less than 3 है, good. ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो 3 बड़ा हो गया है, a is greater than n by a. That's why we can see that it's a very important point. It's a good point to stop. इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. This means that we can say that whenever a becomes greater than n by a, we can stop. हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, and we would have all the divisors in the previous iterations, right? So this means कि हमें कितना iteration लगे. We can write a equal to n by a. Okay, so whenever this condition happens, we can say कि there is no need to check further. There is no need to check further कि और divisors count करने. So this means what I can say, a square is equal to n, right? A square is equal to n. And if I rearrange the terms, it becomes a is what? Square root of n. और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि a is what? A basically represents कि आपका लूप कितनी बार चला है, आपका जो iteration है, जो आपका for loop था वो कितनी बार चला है, right? This basically represents the number of iterations. This means कि you can find all your divisors in square root of n time, which is actually a great optimization. अब आपका अगर n 10 की पावर 12 भी आता है ना, तब भी if you take SQRT of 10 की power 12, you'll still land up with 10 power of 6, which is fine within to work with, right?
दिस मीन्स कि आप आराम से आप बड़े नंबर के साथ भी काम कर सकते हो. दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स और टू फाइंड ऑल द डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर n. याद रखना, दिस इज फॉर getting the this is for finding all the divisors. This is not for counting the number of divisors. Counting the number of divisors is actually a bit has a better approach. Okay, but that is not the thing. So आप देख सकते हो square root of n time is the best way to find all the divisors. Okay, so for example, let's say we have a number like 6. It's not 6. Let's take a number 12. Okay, so I want to find all the divisors of number 12. Let's say I start with what? I start with 1, so I can get 1 and 12, right? एक आपका अगर i होगा तो दूसरा डिवाइजर क्या होगा? n by i होगा. सिंपल सी बात है. If n is divisible by i, okay, then you have two divisors. One is I and the other is n by i. अगर आप n को डिवाइड करोगे i से तो आपको क्या मिल जाएगा? n by i मिल जाएगा. अगर आप n को डिवाइड करोगे n by i से तो आपको i मिल जाएगा. सो इट्स वाइस वर्सा. लाइक 2 है और आपके पास ये यहाँ पर 2 और 6 है, तो अगर आप 2 को 2 से डिवाइड कर 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा. और अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा. राइट, वी हैव 1 and 12, देन वी हैव 2 and 6, देन वी हैव 3 and 4. नाउ नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 और 3 आता है. यहाँ पर क्या हुआ? पेयर्स रिपीट होना शुरू हो गए. ठीक है, a ग्रेटर देन n by a हो गया. कंडीशन हमारी वायलेट हो गई. दिस मींस दैट दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप. तो आप देख सकते हो कि जो इसके जितने डिवाइजर्स थे हमने उन सबको एन्यूमरेट कर लिया है. वी हैव नाउ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ नंबर 12, 1 12 2 6 3 4. ओके ओके, नाउ हाउ कैन वी यूज दिस थिंग टू फाइंड प्राइम नंबर्स? इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए? ओके, सिंपल सी बात है कि एज आई सेड कि these divisors occur in pairs, right? These divisors occur in pairs, right? So अगर मैं 1 और n को हटा देता हूँ, लेट्स से मैं 1 और n को हटा देता हूँ, दिस मींस कि मेरा लूप स्टार्ट होगा 2 नंबर से. I equal to 2 से स्टार्ट होगा बिकॉज आई नो कि 1 जो है 1 नंबर जो है दैट इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर. सो दिस मींस दैट इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद i equal to 2. एंड व्हाट विल डू? I into i लेस देन इक्वल टू n, राइट? जैसे कि हमने ऊपर कंडीशन डिस्कस की थी कि हमें सिर्फ इस कंडीशन तक जाने की जरूरत है, उसके बाद आगे पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है. एंड व्हाट डू वी डू? i प्लस प्लस. ओके, ये हमारा लूप हो गया. What do we do? If our number is divisible by I, if our number is divisible by I, then this basically means कि हमारे पास क्या है? एक डिवाइजर पेयर आ गया. हमारे पास एक डिवाइजर पेयर आ गया. ठीक है, अगर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 1 और n को हटा दिया है, राइट? हमने यहाँ पर 1 और n को कंप्लीटली हटा ही दिया है, राइट? दिस मीन्स कि अगर ये जो इफ कंडीशन है, अगर ये एक बार भी ट्रू होती है, इफ दिस इफ कंडीशन गेट्स ट्रू इवन सिंगल टाइम, दिस मींस दैट द नंबर इज नॉट प्राइम. क्यों? क्योंकि जिसका पेयर 1, n था ना, प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर के डिवाइजर पेयर क्या होते हैं? सिर्फ 1 और n होते हैं, राइट? और कोई डिवाइजर नहीं होता है, और वो हमने पहले से ही लूप से हटा दिया है. दिस मीन्स कि दिस इफ कंडीशन executes even a single time, this means that a number is not prime, that a number is not prime. ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक नंबर है लाइक 18. ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो वी कैन डायरेक्टली सी कि अच्छा 2 डिविजिबल बाय ये हो रहा है. सो कोई और नंबर लेते हैं. लेट्स से वी हैव 15. ओके, सो 15 में 15 या फिर 49 ले लेते हैं. 49 में नहीं, 42 लेते हैं. 40. अच्छा, वो फिर से डिविजिबिलिटी वाला रूल आ जाएगा. ओके, लेट्स टेक एनी रैंडम नंबर. लेट्स टेक 15 only. Okay, so first of all I check if 15 is divisible by 2. It is not. So very well, move forwards, and our I will become what? Our I will become 3, I plus plus. Okay, so now we see कि 15 divided by 3 ये divisible है, इसका मतलब 15 is not a prime. Let's take a prime number like 7, or something else. ठीक है, like let's take what? Let's take 17. Okay, so you start with 2, not divisible. Okay, then you go to what? Then you go to 3. Okay, then 3 is also not divisor of 17. Then you go to what? 4. Okay, you can see that 17 is not divisible by 4, right? Do you need to check for 5? Do you need to check for 5? There's actually no need to check for 5. Why? Because our loop condition is what? I into I less than equal to n. So हमारा पहले 2 था, 2 into 2 less than equal to 17 था. That's why हम उसको चेक कर रहे थे. इसके बाद अगर हमें यहाँ तक कभी इसके डिवाइजर नहीं मिल पाया ना, if we are not able to find any divisor of this number in this range, then it's for guaranteed, it's for sure that we would never be able to find any divisor after this number. ठीक है, ये 4 के बाद आप कभी भी 17 की डिवाइजर फाइंड नहीं कर पाओ, कभी भी नहीं कर पाओगे, राइट? So that is one thing. Okay, so this we'll use this technique to find if a number is prime or not. Okay, so let's try to implement this approach for first. Okay, so let's start. So like we have a number n, we take the number input as n, and we want to check if it is prime or not. So what we'll do, we'll start with what? Let's take a boolean variable f equal to what? Initially true. We initially assume कि number जो हमारा वो prime है. And what do we do? For it I equal to 2, I into I is less than equal to what? N and I plus plus. Okay, if n mod I exactly equal to 0,
what do we get? We f equal to false, and we can break. Okay, and then we can write if the number is prime or not. See out f prime, else we print not prime, not prime. Okay. अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर आई फॉर एन इक्वल टू वन, अगर आपका नंबर एन जो है वो वन है, यू विल सी दैट दिस कोड विल गिव यू ट्रू। ठीक है, वो आपको बताएगा कि वन है जो प्राइम है, राइट, क्योंकि वो फॉर लूप में कभी घुस ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई यू कैन सेपरेटली हैंडल द केस ऑफ एन इक्वल टू वन, राइट। तो इसको आप चला के देखते हैं। a dot exe. Okay, let's take a number like 5. So we can see it's prime, right? Let's take number 4. We can see it's not prime. Let's take some other number like 49. It's not prime. Let's take number 53. It's a prime. Let's take number 29. Again, it's a prime. Let's take number 23. It's a prime. Let's take number 15. It's not prime. Let's take a number like some random number. It's not prime. Okay, it has some divisor, right? So this is how basically you check if a number is prime or not in order sqrt n time. Okay, ये square root time में आपका आराम से चल सकता है. Let's take a bigger number, right? Let's take 1 0, like 10 to the power of what? This is 10 to the power of 6 7 8 9. We can see it's not prime. Okay, let's take some other number. You must have worried about 10 to the power of 9 plus 7. It's a prime number, right? Let's check it. 10 to the power of 9 7. We can see it's a prime number, right? So this is basically how you check if a number is prime. Okay, अब इसके एक बार ऐसा करते हैं ना, एक बार इसके डिवाइजर्स को भी प्रिंट करा के देखते हैं. लेट्स से यू वांट टू फाइंड द डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर, देन व्हाट विल डू, we'll just make some basic changes. We'll start from 1 onwards, and if n is modulo I, just print cout I and what, and n by I slash n. Okay, let's comment this out. Okay, now we will be able to see all the divisors of number n. Okay, let's say you want to find the divisor of 12. So you can see 1 2 2 6 3 4, right? I hope everyone is able to see it. Okay, so we can see 1 2 2 6 3 4. Let's कोई और नंबर लेते हैं, like 24. Let's take 36. वी कैन सी कि यहाँ पर जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनमें देखो ये वाला जो वो है डिवाइजर, वो दो बार रिपीट हो रहा है बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई. सो आई एंड एन बाय आई इज बेसिकली सेम थिंग, राइट. Let's take some other example. Let's take number like 100 or 150. Okay, so we have again all the divisors, right? So in this way you can enumerate all the divisors of a number. Okay, so that basically sums up how do we find the prime numbers, and also how we get the divisors of a number n, of a given number n. Okay, so now let's talk about the prime factorization of a number. So what does prime factorization means? Prime factorization means that every number can be represented as a product of powers of prime factors, right? Of prime numbers, right? For example, say 12 है हमारे पास. Okay, we are talking about prime factorization. Okay, factorization अभी हम देख चुके हैं, जो ऊपर अभी हमने divisors सारे calculate किए, that is basically divisors. Okay, so divisors are also known as factors. Okay, so prime factorization basically means representing this number as a product of powers of prime numbers. Okay, for example, if you try to see, it is basically what? It is what? 4 into 3, or you can say this is basically 2 to the power of 2 into 3 to the power of 1. So here we can see 2 is also a prime number and 3 is also a prime number. So you can represent every number that exists in the world in this form. Okay, let's say you have a number n, you can always represent it in the form of p to the power of x, q to the power of y, and r to the power of z, where p, q, r are prime numbers, okay, and x, y, z are basically integers greater than equal to 1. Okay, so remember this. प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम बेसिकली यही कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एवरी प्राइम नंबर की उसकी पावर कितनी एग्जिस्ट करती है. ओके, सो वी वांट टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर दिखा दिया कि 12 के लिए से हमने निकाल लिया 2 and 3. So let's take another example. Let's take 15, or let's say 20. Okay, so 20 is basically what? 20 is basically 4 into 5, or I can say to the power of 2 into 5 to the power of 1. So we can see कि हमारा p क्या है, 2 है, उसका पावर क्या है, 2 है, then we have 5, उसकी पावर 1 है. Let's take some complex thing like like 210. Let's say we have 210, or let's take 210. So 210 is basically what? It's 2 into 3 into 5 into 7, right? As far as I can see, 6 by 30, 7 30. Yeah, right. So we can see 210 can be presented as 2 to the power of 1, 3 to the power of 1, 5 to the power of 1, 7 to the power of 1. That's why 2, 3, 5, 7 are what? Are prime factors of number 210. So अगर आप इसको लिखोगे तो 2 की पावर कितनी है, 1 है, 3 की पावर कितनी है, वो भी 1 है, 5 की पावर कितनी है, वो भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है.
ओके, सो लेट्स टेक, ओके, सो इन दिस वे बेसिकली यू रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब जो हमने पहले टेक्निक अभी पढ़ी है, ओके, फॉर फाइंडिंग आउट ऑल द फैक्टर्स, यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड द सेम एल्गोरिथम, ओके, बट विद सम मॉडिफिकेशन टू प्राइम फैक्टराइज अ नंबर, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे ढूंढते हैं, और एक बार उसको देखते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से यू हैव अ नंबर n, यू स्टार्ट डिवाइडिंग द नंबर n by 2 एंड यू कीप ऑन डिवाइडिंग इट until it is divisible by 2। ओके, लेट्स से वो तुम्हारा काउंट है, कुछ काउंट 2 है। ओके, तो दिस मींस कि तुम्हारा जो n है ना, उसमें 2 इज प्रेजेंट एज अ डिवाइजर, एज अ प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ CNT2। ठीक है, देन फाइनली जब तुमने सारा डिवाइड करके देख लिया है, यू आर लेफ्ट विद अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि तुमने 2 सारे हटा दिए डिवाइड कर करके। राइट, नाउ यू कैन गो एंड चेक फॉर अदर प्राइम नंबर्स, राइट, लाइक 3, 5, 7 एंड अदर ऑनवर्ड्स। राइट, तो वो कैसे होता है, यू स्टार्ट डिवाइड बाय 3, अगर 3 से डिविजिबल है तो देन यू कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 3। ये कुछ ऐसा एल्गोरिथम बनता है। ओके, यू फर्स्ट टेक n, यू कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2, so you get CNT2, then you move forward and you try dividing it by 3, okay, and you get some count 3। okay, these values can also be 0, ये 0 कब होगा, जब वो divisible नहीं होगा। right, then we go to what, then we go to next step, we get 5, then we go to next step, we go to 7। okay, in this way CNT5 and this will be what, CNT7। अच्छा, यहां पर हम सेम चीज यूज करेंगे क्या, y, I into I remains less than equal to 1। ओके, ये सेम चीज यूज करेंगे। यहां पर n और i दोनों साथ में अपडेट होंगे। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, हम n को डिवाइड करके देख रहे हैं, n से उसके जितने भी पावर्स उनको हटा रहे हैं, एट द सेम टाइम हम i को भी अपडेट करेंगे। ठीक है, अपने जो प्राइम फैक्टर्स हम यूज करने वाले हैं हम उनको भी अपडेट करेंगे, और जो n नंबर है हमारा हम उसको भी यूज करेंगे। अच्छा, आप देखो, अच्छा आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम 2 3 के बाद 4 पे नहीं गए। क्यों, क्योंकि 4, अगर कोई नंबर 4, अगर कोई n नंबर है और वो 4 से डिविजिबल है ना, तो वो ऑलरेडी 2 में काउंट हो चुका होगा। राइट, वो ऑलरेडी 2 की पावर्स में काउंट हो चुका होगा। सो इफ यू यूज दिस प्रोसेस, एट द एंड यू विल गेट आइदर 1 और सम नंबर जो कि कुछ बचा होगा। राइट, लेट्स से x, जब तुम ये सारा ऑपरेशन, सारा लूप चला के देख लोगे, यू विल आइदर बी लेफ्ट विद 1 और सम नंबर x। अगर ये नंबर 1 बचता है, इसका मतलब यू हैव काउंटेड ऑल द प्राइम फैक्टर्स। अगर ये नंबर 1 के बराबर नहीं है, दिस मींस कि जो आखिरी नंबर x बचा है ना, वो भी एक प्राइम नंबर होगा, वो भी एक प्राइम नंबर होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। लाइक लेट्स से वी हैव व्हाट, लेट्स टेक अ नंबर लाइक 25, 75, लेट्स टेक 75। ओके, लेट्स टेक 75। 75 good? Yeah, I think so, it should be good। no, let's not take 75, 75 is not a very good example। इसको लेते हैं, व्हाट, इसको लेते हैं लाइक 3 की पावर कुछ लेते हैं, let's take it 63। let's take 63। okay, so we know that 63 is not a prime, क्योंकि 21 सिंपल सी बात है, 3 से डिविजिबल है ये। okay, so we start with 2, तो ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो CNT of 2 will be 0। okay, then we move on to 3। जब आप 3 से डिवाइड करते हो, it becomes what, 63 divided by 3 becomes 21, then you again divide, you get 7। okay, you get what, you get 7। सो वी कैन सी कि 2 बार डिवाइड किया तो 3 का काउंट कितना आएगा, काउंट 3 इज व्हाट, 2। सो यहाँ पर इसका मतलब 3 की पावर 2 तो एग्जिस्ट करता है। नाउ वी कैन सी कि अब जब हम जाएंगे किस पे, हम जाएंगे 5 पे जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखना है, इस वाले लूप से हम i प्लस इक्वल टू 2 कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वी नो दैट एक्सेप्ट 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर बेसिकली ऑड। राइट, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सबके सब ऑड होते हैं। नेवरदलेस हम देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर i इंटू आई इज व्हाट, इज लेस देन इक्वल टू n। ये क्यों हो रहा है, याद रखो हम n को भी अपडेट कर रहे हैं। n पहले 63 था, उसके बाद 21 हुआ, उसके बाद 7 हो गया। तो अभी करंटली क्या हुआ है, जब i3 था तब मैंने स्टार्ट 63 से किया था, उसके बाद i3 रहा मेरा। ठीक है, i इंटू आई इज व्हाट, i इंटू आई इज 9, सो 9 इज लेस देन 63, तो उसके बाद मेरा 21 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से डिविजिबिलिटी आई, डिविजिबिलिटी 7 हो गई। ओके, उसके फैक्ट्स काउंट कर लिए। i प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 25 हो गया। तो 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 इज व्हाट, 5 इंटू 5 इज 25। सो वी कैन सी कि 25 इज व्हाट, इज ग्रेटर देन इक्वल, इज ग्रेटर देन n। राइट, तो इसका मतलब मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो देखो मेरे पास फाइनली क्या नंबर बचा, मेरे पास फाइनली बचा है 7। मेरे पास फाइनली 7 बचा है। इस 7 प्राइम और नॉट, मैंने क्या कहा था, अगर 1 बचे तो इसका मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स काउंट हो गए हैं। अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 बचता है तो वो प्राइम होगा हमेशा। वी कैन सी दैट 7 इज प्राइम, तो ये भी आपके प्राइम में काउंट हो जाएगा। आओ इसको एक बार जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हाउ डू वी फाइंड, एक्चुअली फाइंड दिस। ओके, ओके, सो लेट्स एक्सटेंड इट। ठीक है, इसको जरा मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, so let's say you want to prime factorize number n, so what you will do, let's create a map। okay, let's create a map। so map क्या करेगा, इस मैप में हम क्या डालेंगे,
इसके पहले पार्ट में डालेंगे प्राइम फैक्टर और उसके बगल में डालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी बार आया है, कितनी बार क्या उसकी पावर है, राइट। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू के लिए अलग से लूप चलाएंगे, वाई, क्योंकि टू एक स्पेशल केस है, एन मॉड टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो क्या करेंगे, एन बाई इक्वल टू टू, एंड लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल नोन एज काउंट, इंट सी इक्वल टू जीरो। और नेवरदलेस कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू एमपी ऑफ टू प्लस प्लस। सो दिस विल बेसिकली काउंट की नंबर n इज डिविजिबल बाय टू हाउ मेनी टाइम्स, या फिर टू की पावर क्या है उसमें। ओके, नाउ वी कैन सी कि हमारा n लगातार रिड्यूस भी हो रहा है, हम उसको बाय टू से डिवाइड भी कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन द लूप फॉर इंट i इक्वल टू व्हाट 3, i into i is less than equal to n and i plus equal to 2। ओके, यू कैन सी हेयर वी हैव मेड अ मॉडिफिकेशन, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो सबके सब ऑड होते हैं, दैट्स व्हाई 3 5 7 9 इस तरीके से समझाएंगे। रिमेंबर 9 हमारा ऑड नंबर, 9 जो है वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा प्राइम नहीं है, ठीक है, पर हम 9 पे जाएंगे भी नहीं, ऐसे कभी कंडीशन नहीं बनेगी जहां पर हम i इक्वल टू 9 भी यूज करें। क्यों, क्योंकि वो 3 में पहले ही कवर हो चुका होगा। दैट्स व्हाई अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है ना तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट दोस फैक्टर्स, राइट, तुमने वो ऑलरेडी पावर्स वो काउंट कर ली हैं। दैट्स व्हाई द नंबर्स व्हिच आर कॉम्पोजिट, उनकी डिविजिबिलिटी, उनसे डिविजिबिलिटी चेक होगी ही नहीं, वो कंडीशन ऐसे कभी लैंड ही नहीं करेगी, राइट। सो नाउ व्हाट डू वी चेक, व्हाइल n mod i एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब हमारा नंबर क्या है, जो डिवाइजर है वो i है। सो व्हाट डू वी डू, n बाई इक्वल टू i, ओके, एंड mp ऑफ i प्लस प्लस। ओके, आफ्टर दिस प्रोसेस गेट्स ओवर यू हैव टू चेक कि तुम्हारा जो फाइनल n आया है वो 1 है या 1 नहीं है। इफ n इज 1 इट मींस दैट यू हैव काउंटेड ऑल द प्राइम फैक्टर्स, इफ नॉट इट मींस कि अभी जो नंबर बचा हुआ है तुम्हारे पास, n जो फाइनली बचा हुआ है वो भी एक प्राइम नंबर है। इफ n इज ग्रेटर देन 1 वी डू mp ऑफ n प्लस प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, अब सी आउट ऑल प्राइम फैक्टर्स, ओके, एंड स्लैश n for auto x mp and see out x dot first and x dot second, okay, slash n। ओके, सो अब हमने सारे प्राइम फैक्टर्स काउंट कर लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। लेट्स ट्राई टू चेक फॉर एनी नंबर। ओके, लेट्स से वी हैव अ नंबर लाइक 210। So we can see कि all prime factors are what, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। So we can see कि if you try to represent number 210, you will see it will be what, 2 to the power of 1 into 3 to the power of 1 into 5 to the power of 1 and into 7 to the power of 1, right? Let's take some other number. Like what? Like 140. We can see it's what, 2 to the power of 2 into 5 to the power of 1 into 7 to the power of 1. So in this way you can represent any number in the form। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि you can count कि जो प्राइम फैक्टर 2 है वो कितनी बार आया है यहाँ पर, ठीक है, वो कितनी बार पावर में आया होगा। ओके, दिस बेसिकली p to the power of, जैसे मैंने बताया था, p to the power of x, q to the power of y and q to the power of z, ठीक है। लेट्स टेक एनी अदर नंबर लाइक 1500। we can see it has only three prime factors, 2 1 and 3, 2 1 2 3 and 5। okay, on ये count है, so basically 2 to the power of 2 is what, 4, 4 into 3 12 and 12 into 125, ये 5 to the power 3 है, this basically means कि 12 into 125। if you try to multiply, okay, let's try to see, okay, 12 into 125, we can see we can get 1500, right? okay, so in this way basically we calculate the prime factors of any number। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, let's take some other number like some big number। So it has only two prime factors, right? One is 2 and the other prime number factor it has is what, 369739। okay, that's a big number। okay, so in this way basically you calculate all the prime factors, you do prime factorization of any number n। okay, okay, so before we go I want to just add on the last thing। sometimes you might find a question like you need to count the number of divisors। okay, अच्छा, जो अभी हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाली चीज यूज की है, कहां पर यूजफुल है वो भी आप देख लो। okay, let's say whenever you are asked to find the count number of divisors, okay, let's say you are given कि count number of divisors, number of divisors of n। okay, कि आपको काउंट करना है, आपको उसको आउटपुट नहीं कर रहा है, उसको आपको दिखाना नहीं है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दोस डिवाइजर्स बट यू ओनली नीड टू काउंट द नंबर ऑफ डिवाइसेस, कितने डिवाइजर्स हैं उस नंबर के। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 12, तो 12 का क्या था, 1 2 4 3 4 6 and 12, so we have what, we have 6 number of divisors। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, सो लेट्स आई विल टेक एनी नोटेशन, let's say function of this number n।
Okay, it's basically what, let's say if you try to represent this number in its prime factorized form. तो हमने अभी क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था, p to the power of x and q to the power of y and z to the power and r to the power of z. Okay, so what do you do, agar if this number n is presented in its prime factorized form, the number of divisors of number n is basically equal to x plus 1 into y plus 1 into z plus 1. ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने 3 डिवाइजर लिए, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं. ओके, लेट्स से आपके अगर और है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. सो गिवन अ नंबर n, गिवन अ नंबर n, you want to count the number of divisors, count the number of divisors or factors of n. You just try prime factorize it, you just try to prime factorize it and get की powers क्या है, get the powers of each prime factor. Okay, so if you represent it like p to the power of x and y, then r z, then you take whatever you can extend it any forwards, then you can basically say अच्छा ये p q z से better है कि मैं इसको a1 a2 के फॉर्म में ले लूं, it would be better. Okay, so like you have what, let's say you have p1 to the power of a1, then you have p2 to the power of a2, then you have p3 to the power of a3, then you can move forward like pk to the power of ak, where basically p1 p2 p3 and p up till pk are the prime factors, and a1 a2 a3 are the powers that they are raised to in that number. Okay, so you get the prime factorized form of that number n. Okay, then the count of divisor is basically equal to a1 plus 1 into a2 plus 1 up till ak plus 1. Okay, so in another way you can say it is basically starting from what, starting from I equal to 1 up till k, this is product of, this is product not summation. Okay, this is a product of ak plus 1. ये आपके बहुत काम आएगा, दिस फॉर्मूला विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी वेरी यूजफुल. अच्छा, इसको एक बार देख भी लेते हैं कैसे. लेट्स से वी हैव अ नंबर 12. सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1. ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं. सो वी कैन सी इट्स व्हाट 2, सो 2 plus 1 is what 3 into 1 plus 1. So this is what, this is 3 into 2 which is 6. So we can see कि हमारे पास exactly कितने 6 डिवाइजर्स थे यहाँ पर, right? Let's take any another number. Let's take number 120. Okay, so 120 is what, 120 is if you divide it, so 60 into 2, then what, 15 into 4, 15 into 4 15 into 4 is 60. Okay, so 15 8 are 15 into 8, so this is basically 3 into 5. So 120 क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा 2 to the power of 3 dot 3 to the power of 1 and 5 to the power of 1. So 15 into 8 is 120. Okay, now if you want to count the number of divisors of number 120, so it is what, it is 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1, which is what, which is 4 into 2 into 2, which is basically 16 divisors. So if you try to calculate all the divisors of number 120, you will find कि total 16 divisors possible हैं. Okay, so this is a very fun way to go. So that here's where prime factorization comes in. Okay, यहाँ पर इसका बड़ा यूज आता है. Okay, so जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी ली थी पहले. Okay, so what you will do कि उस मैप के ऊपर आइटरेट करोगे and you will just multiply all the frequencies and you will get the total number of divisors of any number. Okay, so I think that is all for today, guys. आप चाहें तो इसको you can go ahead and try to implement it. Okay, so okay, I think इतना टाइम नहीं लगेगा, आगे एक्सटेंड करना है. So I'll just try to show it to you. Okay. Okay, so ll, let's take answer equal to 1. Okay, 1 ll, so basically this will count of all primes. So let's write total prime factors will be what, so we multiply answer into what, x dot second is basically frequency plus 1, and then we see out x answer slash. Okay, now let's take any number, जैसे कि हमने 120 लिया था. अरे यार, okay, like 120, we can see we have 16 prime factors, right? We have 16, not 16, total divisors. Total divisors. Okay, let's try to run it again. कोई और नंबर लेते हैं like 15. So total divisors are 4, जो कि क्या होते हैं 1 3 5 and 15. Okay, let's take the number 4. We have 3 1 2 and 4. Okay, let's take some other number like 81. 81 has 5 divisors, like 1 81, then 3 and 27. Okay, then 9 and 9. 9 is basically 1 only. So in this way basically you can find the count of all the total number of divisors of any number n. आपको बस पहले से प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है उनका प्लस वन करके प्रोडक्ट ले लेना है. ओके,
like this as we discussed. Okay, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so I think that actually covers up all the basic required for prime numbers, divisibility rules, not divisibility rules अलग चीज होती है. But yeah, divisors, multiples, factors, prime क्या होता है, prime numbers क्या होता है, how do we check prime numbers, how do we do prime factorization, how do we use this method, this prime factorization method to check if a number is prime or not. And that actually pretty sums up the first video in this series. In the next video, we'll cover up some other topic in number theory. Till then, you can like, share, subscribe. Okay, and please stay tuned in for other updates. And bye bye, guys. Happy day ahead.